everyone, welcome back to your own channel, Thakas in here. My name is Dheeraj. Many of me already know me, but those of you who do not know me or watching my video for the first time, I'm into selfless services in for last 4 years, and uh, with very good successful cases of 1,500 plus resident permit and probably 8,000, 9,000 visa cases that took free of cost, no charges. It's just that we all help together as a community in the WhatsApp group by providing the best possible information to all the legal immigrants, not the illegal. We did not support any kind of illegal immigration. But today I'm here with a very, very, very serious topic. I think none of us has even imagined in last 4 to 5 years. I have been here for 4 years and I have not expected anything like that. And I always say, just because you do not have a problem, it doesn't mean that problem does not exist. Do not wait for the problem to come. Find solution before it reaches to you. And that's why today's topic is very, very, very important for you because most of us have filed or file joint taxation, especially when the spouses are not working. It really gives us very, very good relief in tax because we are staying with the spouse and children, and technically, if you see, we are perfectly entitled for the joint taxation, and that is what we have been doing for the last 4 years. So far, I have not received any such notices, but last 4 months back, I found first case of such notices. Like you can see the subject line community property resign in Poland. I'm sorry, it's very tough to pronounce, but I'll try Polonos Mahatokova. In English, it's called community property resign. And this is a general practice in Poland, especially when you get married. As per the Polish law, by default, you and your wife's property are considered as joint. Any property which you have obtained after the wedding is considered as joint until you submit a separate declaration called prenuptial agreement or intercisa. So, but here the problem arises. Um, so can you ask a question? Is your marriage legally governed by community property regime? Because the problem arises in India that in marriage, like in India, none of the marriage acts actually create any automatic joint ownership of assets. And in Polish law, by default, marriages are have this regime, and that is where the problem arises. So let me give you first disclaimer, because purpose of this video is not to panic, not to create a panic situation to anyone, because as I said, these all things started a few months back when people started getting notices, and I was dealing with 4 different people at 4 different places. So what I decided a few days back, let's bring all of them on the same platform, and I created a WhatsApp group by the name of Income Tax Notices, and we are adding member, and now I'm surprised that we have around 20 members, out of which only me and Devyani, 2 people are there who have not received any notice so far, but all other group members, in fact, majority of the group members have got the notices, and I'm trying that anybody who receives notice are the only part of the group so that we can tackle this situation uh, together. And you may be wondering or thinking, why am I so concerned about it? Because I visited income tax office 2 days back, Zeus office, and a lot of offices, council, what is this called, tax consultants and lawyers. But honestly, this is such a new and fresh issue that nobody is aware about this. Everybody is thinking simply by uploading the marriage certificate and translated copy, you guys are eligible for this, but it is not true. And that is the reason I'm so concerned, because if I have not, or many of our friends have not got it, but because someday they will be asking this commune property document and probably none of us will have it. Let me clear a lot of myths, because I know a lot of people, when I share this topic, they're saying, oh, we have purchased property in Poland and do not have to worry. And there are a lot of myths like, okay, maybe the person has done something wrong. That's why he got the notice. But let me tell you, they are very genuine people. They are with the family. They have been never out of Poland in last 2 years, 3 years. They have very genuine cases. Still, they got the notice. It means anybody or any of you may receive this notice. So don't assume, don't go to the chat GPT. I'm not against AI, okay? Chat GPT, Copilot are good for research purpose, but don't copy paste everything, because they tell you information based on the sometime emotion, sometime based on the web search, but they are not accurate. I am here talking about real use cases which we have been trying for last few months,
And let me give a disclaimer. The purpose of this video is to let people know what we have done so far so that we do not have to repeat everything on this topic again, especially when you join the income tax group. Because every time I have to explain it, bro, don't paste, copy and paste these ChatGPT replies because we have already done, everybody has ChatGPT and Copilot. So don't paste all these things, but it doesn't help. It just create the spam. Ask her. That's why in this video I've covered everything that so far we have done and what are the results of it. So before you join the group, watch this video and let me know if you don't understand anything. You can put in the comment box. Second, as I show this video to your tax consultant and lawyers, friends in Poland, which you have, and even in India, and let us know if they really can help find a solution, as this is not the problem of one or two people, but this is the problem of whole community related issues. I have not received notice yet, but this doesn't mean it may not come. Prevention is better than cure always. And that is the reason I'm making this video even before I'm affected by this or any of my friend circle is affected by this. Trust me, they are very genuine cases. And there's a very common myth, especially for the people who have purchased property in Poland, especially Indian community. So don't assume those things because uh, technically speaking, uh, you know, this when you have property in India jointly with wife, technically, if you see that is also a joint property, but it doesn't give you the rights as a commune property. It gives you, it is called co-ownership. And by the same logic, even in people who have purchased property in Poland, that is also co-ownership of the property. Because to define or to show commune property, only way is the Polish marriage certificate, because only Polish marriage law has this provision, but not Indian, even probably many other marriage acts doesn't have this provision. And that is why I don't be under illusion that, oh, I am safe because I purchased property. And even if you have purchased property, imagine the situation of you purchased property 1 or 2 years back. What about before that? Because the income tax department may scrutinize in 5 years old data. So imagine if you have to pay such a big amount. And as I mentioned in the beginning, so stop assuming or judging people without knowing the background of the work. AI is good for, but it just processes information. Okay. Uh, but it cannot be relied because it doesn't have use cases. And what we are talking about here is are the use cases that we have tried in the last few days. So intention is not to create panic, but to find solution as technically even after marriage certificate submission, commune property document is respected or not, there's no clarity on it. Okay. So let's see. Most of you know that our chat faced by NRI, Indian NRI Poland as a community, but today for the first time, this video is not about solution, but about a various problem which has started and being reported to our WhatsApp income tax group, like about the income tax notices in our WhatsApp group in last few weeks, and it is increasing every day. And this problem can affect almost every Indian or probably other nationalities too, who is staying with spouse and children genuinely, sharing income and expenses. It doesn't matter with whether you are single earner or both partner works. Almost every category got the notices. And please pardon me for the spelling because I didn't want to make the video. I'm a lazy guy with making videos, but in hurry because I really wanted to let the people know what is the problem and so that you guys can also work together, find out some maybe good consultant, lawyer. But honestly, these notices, I mean, don't assume that these notices are for the people who have filed through themselves, because 50% of people file through consultant or tax consultants or agents, and they still get the notice. So that doesn't guarantee you that you will not get the notice, because this is the problem very new for them as well. So it's not their blame, it's not your fault, it's not my fault. We all have somebody joined as per the policy and law, but definitely this commune property is a surprise. So many, as I was telling earlier, many people think that they bought property in Poland and now by default they are already part of the commune property. It is not true, as having joint property in India or Poland only makes you co-owner of the property, while income tax department is looking for statutory proof like Polish marriage certificate, and law by default consider both the couple as commune property regime and their income tax is shared equally between couple from day one of the marriage. It doesn't matter if one spouse is earning or one is not earning. Total income is always divided by two equally unless they have separately signed a prenuptial agreement called intercessor. Okay, so now I'm actually pointing out to the actual problem. So now I hope by the now you know what is called commune property. It is very simple in the simple layman language. Husband and wife married together. If they are not given intercessor or prenuptial agreement, their every asset property from the day one
till further, it will be divided equally, it will be considered equal between them. Unfortunately, Indian Marriage Act for any religion considers matrimonial relationship uh, like the certificate as matrimonial relationship, but doesn't recognize a community called commune or marital property regime under any marriage law in India. And there's no provision so far based on the discussion with multiple lawyers because I myself is a lawyer in India, and I finished and plus I have checked with Saket District Court, my friend who are advocates, very quite good in practice, and so far there are definitely amendments provisions in the draft or probably in the parliament, but it is not enforced yet, and they are the part of amendments. But for now, uh, you know, there are no clause in India, which and due to this mismatch, our in the Indian Marriage Act, Indian taxpayers in Poland who have filed joint taxation is being asked to submit document proving commune property. So I hope you understand the situation and criticality of the problem. This is not the matter of current year. Maybe today we can make an agreement which we are actually testing that how we can avoid this problem in future. And definitely I will post my next video on the solution because this video only talks about the problem and to make you understand, to help you understand what exactly is the problem and what has been tried so far so that you can take it further and maybe discuss with lawyers in Poland or India and find out if something can be done based on your best experience and knowledge. Hope this helps you understand the issue actually. And as I was mentioning, like every other person, I was also not bothered about this problem because this is not the problem started today. I got first case 4 months back. Thanks to all the volunteers, the people who reported me that these problems, and we started working together. And I really thought initially that it may be one exceptional situation or case, but another person with same situation, both husband, wife, and kids in Poland for 4 years. Spouse is a non-earning member, have rental agreement, have address registration calls in Macedonia, marriage certificate translation and originals. All these common documents are submitted, but it's not accepted by the tax officer, stating that none of these documents conforms both the spouses having everything equally shared. Post-wedding, it is called commune property regime. Slonos Matokova. Sorry, pardon me for my Polish pronunciation. I know it's very bad, but understand these all documents which is updated was refused, saying these doesn't prove the commune property design because the primary criteria is your marriage certificate of India, which proves the marriage, but because Indian law doesn't have this legislative clause, they are not accepting. And in Poland, it is by default in the marriage unless you submit a summation of the document. So hope you understand the seriousness. This is something legislative law or legislative difference between Poland and India. And you know how legislation is passed. First, it goes to Lok Sabha, Rajya Sabha, in Parliament, it has to be passed an assessment. So probably even at Modi ji level, if he wants to get to know about this problem, if he tries to do something, I don't know how fast it can be done, but it will not happen immediately. I know that. So technically, if you see, due to the legal difference in Polish marriage law and Indian Marriage Act, it's impossible to show any such document. But this doesn't mean that we Indians are not sharing property or we do not have equal property with spouse. As in practice, by default, every Indian, in fact, most of the Indians who have children and wife, they when they are staying in Poland with family are sharing income. We are sharing our income, and due to the fact that law of land should be applied because we are following the Polish tax laws, and that's why law of land should apply. So if I'm married, I'm staying on Polish land, by default, I should be considered for this regime, even if I don't have this clause in my Indian marriage certificate, because officially I'm married in Poland, and law of land says that anybody who is married in Poland or stays in Poland and is married should have been eligible for joint property regime until it doesn't give the separate declaration called intercisa. So you're getting my point, right? Logically, if you see, we are right. It must already be acceptable based on marriage certificate, rent agreement, address registration, and we also pay dues for the family. So logically, we are all right. But the case is definitely genuine. And due to this statutory difference, responses are being rejected. And that is the hardcore ground reality so far. So we're talking about how serious is the issue. So imagine if you are not able to submit proof and convince officer, you will be asked to file revised single return and pay the difference tax amount, which is huge in most of our cases. And based on response and results, you may also be asked to file revised return, which happened with two of the cases.
and they were asked to file single for last 2 years, in some case last 3 years, in some case it may be 5 years as well. And that imagine the amount based on income which you might require to pay with interest and penalty in some cases. So this problem suddenly started from this year, and no one is sure on why suddenly. There are a lot many other countries who have similar issues or similar law, but I'm not sure what is happening with them. But for us, definitely, and it started from Krakow. I don't know if it would reach to Warsaw or other cities, but for now, I have only got cases from Krakow. And if you share this video with a lot of people, then definitely we may get to know if more people are affected. And yes, I remember one of the guys saying, oh, maybe his wife was not there for 6 months or less in Poland. No, it's not true. His wife is here for 2 years and still he got it. So don't assume, I'm saying, don't assume. Nothing is sure here. And that's why I'm not giving solution. I'm telling the problem. Maybe in my next video, based on all the use cases that we have tried, I might share the solution in next video. Okay, so if you think any tax consultant, any lawyers may help in your case, in this case, uh, we have tried reaching 30 plus tax consultant, and most of the people who got notices were filing their return from tax consultant. But surprisingly, this situation is unique and new. So it's not their fault, but this doesn't mean filing through tax consultant may never get you notices like this. Lawyer can help you filing the appeal, but only when you want to contest, or let's say uh, when you have been given a decision and you want to challenge it in the court, definitely lawyers can help. Maybe some legal opinion or affidavit can be tried, but so far, whosoever we have contacted in Poland, they say they can't file affidavit in such scenarios or probably the legal opinion. So definitely, if you know anyone who can do this and if it is accepted, we can try as a use case, because we have few volunteers who are going through this situation, and it will be the solution for everyone. Because if it works for one, it will work for most of the people. Let me tell you what has been done so far to resolve this issue. So we form a WhatsApp group to address, because I was dealing with one person, then 2%, then 3%, then 4%, all the people at different places. And it was very tough to communicate with all those few four people at a time. So what I did, I brought one group called by the name of tax notices. I brought all of them on the same platform. And then we started exploring, because I have one major group with maximum people. So from there, we got to know, okay, some more people got the notice. Now we brought all of them together and we tried below steps to identify whether this can solve or not. And a lot of our volunteers in the group, they have visited different tax offices just to see if something can be found or something can be concluded, but unfortunately none of them got success so far. So after forming the WhatsApp group, as I said, um, probably I can show you everyone who got notice. We added them to the group, and they have 1,000 plus chats and conversation lists. Whatever research they have done visit to income tax offices, lawyers, tax consultant, and all the volunteers have tried their best. But so far, whatever justification and response we have given to these income tax officers, we got refusal. For example, for Indian marriage certificate translation and apostille copy, they refuse, saying that it just proves the relationship, but it doesn't prove the common property, because India doesn't have the commune property regime. So that was the response. Second was address registration and rental contract, assuming that, most of us in Poland, they have rental property, and some of us don't have any property in India as well as in Poland. So technically, we see rental property and assets that we have in the house are the shared one by default, and that we can prove either by the rental agreement or by address registration called the Moldovania. But they say it doesn't prove the commune property regime, and I don't know what else can be proven. And then, some people assume that if they have a joint property in India by the name of husband and wife or spouse, and technically you see they are right that it can act as a commune property. But they said this shows co-ownership, but this doesn't show the commune property regime. They refused it. And by the same logic, people who think that they have property in Poland by both spouses' name, by the same logic, this also proves the commune property regime, but not joint property regime. So far, I have no success cases in all of these four scenarios, and we don't know what next. So we are all trying. Either so only choice we have is file a single, pay the penalties and interest, which will be very huge amount, or fight, contest, or appeal in the court. This is how the notices so far looks like, and as you can see clearly in the notice, obviously this is in Polish, so let's translate in English. And in English, if you see, it says further to the telephone confirmation or conversation, because generally they call you, then they send you email, and sometime in the Podatki portal you get the notices. So if you go there, you will be easily seeing.
So it clearly says, please submit the following document: a marriage certificate confirming the marriage, along with Polish translation of the document. So whenever somebody is sending this document, it's perfectly accepted, no problem that yes, you are married. But second document is the main problem. A document confirming the existence of marital property regime between you, along with the Polish translation of the document. Now, this is the only problem segment that we are facing, and this is where whatever document we are submitting, it is getting rejected or refused, and that is where the problem is. So I hope this problem is very clear to you now. I don't see any reason for the confusion, and don't go over chat GPT and paste in the group because it really causes spam. Now, let's again understand. In Poland, the default marital property system uh, is statutory community property regime called Splonos Ustamowa, which starts automatically upon marriage unless spouse sign a prenuptial agreement and intercessor. So under this regime, all assets and income acquired during marriage belong jointly both to both the spouses. I have already explained, but still I am formally telling you now. I mean, you can skip the video from here, but just to make sure that we are on the same page. And regardless of which spouse earn them, like one spouse is earning 4,000, one spouse is earning 10,000, so combined it's 14,000 and divided by 7. So it will belong 7,000 to one, 7,000 to other. That is the meaning of joint property. So this includes salary and employment income, income from business activity, income from joint and even personal property, and uh, just take it like property bought jointly in India. In Poland, whenever salary earned by husband, it automatically belongs to both spouses. And in India, when salary is earned by husband, it belongs to husband unless he choose to share. And that's the difference, income tax department is actually focusing when it comes to the joint property regime. So Polish joint taxation assumes income of spouses is legally shared, but in our case, like Indian case, they argue that income is legally individual. And even if you practically, so like we all share our income with the family, right? But according to them, it's actually the individual income, and that is where the difference is coming. This you can see. I mean, I tried to give more description. Like the in India, legal system is different. It doesn't have any statutory community property regime like Poland. So the tax office must confirm your marriage legally status, which we are able to successfully justify almost everyone. But then your marriage is not governed by separate property regime. So this is where we fail, and they're essentially checking whether you signed a prenuptial agreement or your country's law imposes separation of the property. So in Polish term, they're asking for the proof of Splonos, Maltova, Malsinska, called community property design. So overall, but since we are married in India, we cannot provide community property certificate because India doesn't issue any such document. This is the end of discussion. I hope this is clear, right? Same thing I try to explain in next slide also in a different language, like separate property remains assets owned by before marriage, inheritance and gift. So obviously, when a couple gets married in Poland, anything before the wedding, is not a shared property. For example, if you own something before the marriage, if you have received a gift, then this is not the joint property. But after wedding, your property, whatever you earn together, is your basically the joint property or common property. Now, so again, joint taxation is not a problem, and it is not wrong also. Joint taxation of spouses in Poland, it is allowed, and Polish law completely allows it. Okay, you can file single as well as joint. If you are married for the whole tax year, you have marital property, marital commune property during the year. If you're a tax resident of Poland or meet the special non-resident condition, and it doesn't matter only one spouse works or other take care of home and child, even then you can file joint taxation. But again, the question arises again at the same place where Indian tax law uh, treats spouses as separate taxpayers. So many people are getting notices to prove joint taxation relationship because Poland income treated as joint property after marriage, and in India income must be reported separately and sometimes clubbed only in limited cases. Okay, so this is the difference. And in the last but not the least, here is the link I have shared in the description. You can go in details. Obviously, nowadays the world of ChatGPT and Copilot, so you have everything. But yeah, so let's talk about the solution. So far, the only guaranteed solution we have here on this topic. Uh, so if you have a Polish marriage certificate without separate prenuptial agreement or intercessor, you have no issue. So people who are married in Poland, as per Polish law, no problem, no need to worry, just relax, enjoy. Okay. Uh, but
Again, my appeal to you from this video and the main purpose of the video, if any of you know any ways to find proof of Polnos Majtokova Malzinska document, which is also known as commune property regime in English, we call it commune property. Do share with us in comment box, and I promise we will come with final video of solution of the video once whatever testings that we are doing, and once we have found some conclusion of this topic. I will definitely bring another video with the conclusion, or you can say the final solution of this issue. Even if we are not able to find, I will at least let you know that there's no solution. Even if we are able to find something, let's say today if we sign document which might help in the future, maybe some notary agreement or something, I will share that format, I will share the exact document, and I'm pretty sure it will help you save in future. But my main concern is about the past. So we are talking about two problems. One, what happens in future? One, what happens to the past? For future, definitely we can find some notarial solution, which I'm still exploring with the group, and I will let you know as soon as I find something. But for past, that is the main concern, because last 4 years, 5 years, 6 years, what will happen if they ask you to, file a revised single ITR? It will be huge amount, and that is what the main concern. So for now, uh, I would like to conclude like this. Since you are married in India, you cannot provide a community of property certificate because India doesn't issue such a document, as I have consulted with most of my lawyer friends in India and also, the tax consultants. So hope latest use case and solution will be shared with AI based result by viewer. So without, sorry, I don't mean to say without the AI based result by our viewer. So please like, share, and subscribe this video as it may help someone in need. Check description for reference link. If you have received such notices, comment, and I will add you to the income tax notices group. Please help each other, and let's help each other as one India and Indian to make the world more beautiful. If you have any comments, any feedback, any suggestion, please feel free to add in the comment box, and let's stay connected, let's support each other, and let's find solution of the problem. And please, if you find any solution, do share, don't hesitate, and we will together try to solve this problem. Thank you so much for joining, and you have a good day. नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ठाकुर इन यूरोप। यहाँ से मैं वीडियो हिंदी में कम्युनिकेट कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदी में चीज़ें कई लोग को ज़्यादा समझ आती है, जैसे कि मुझे। तो प्लीज़, और ये छोटा ही वीडियो होगा, हिंदी वाला पार्ट, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा हमारे डिस्क्लेमर से, क्योंकि जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ही सीरियस गंभीर समस्या है हमारी कम्युनिटी के लिए इस टाइम पे, और ये अचानक से ही आना शुरू हुआ है। तो जस्ट बिकॉज आपके पास कोई प्रॉब्लम अभी तक आई नहीं है, आपको ये नोटिस नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं कि कभी आएगा नहीं, कभी भी आ सकता है। तो उसके लिए तैयार रहिए। और ये सारा एफर्ट मारने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि प्रॉब्लम आने से पहले उसका समाधान निकाला जाए। तो अभी भी मुझे भी ये नोटिस नहीं आया है, एंड डेफिनेटली मैं इनकम टैक्स ऑफिस गया तो उन्होंने ये पूछा, जब तुम्हें नोटिस नहीं आया तो क्यों परेशान हो। लेकिन मैं कैसे बताऊँ, ये जो प्रॉब्लम है तो कॉमन प्रॉब्लम है ना हमारी कम्युनिटी की। जब हमारी कम्युनिटी की प्रॉब्लम सेम है तो समस्या भी तो और सॉल्यूशन भी तो सेम ही होगा ना। तो इसीलिए मैं अभी से इसके पीछे पड़ा हूँ। इस प्रॉब्लम को बोलते हैं जॉइंट टैक्सेशन फॉर इंडियन कम्युनिटी। आप हस्बैंड वाइफ बच्चा सब रह रहे हैं और उसके बाद आपने जॉइंट टैक्सेशन फाइल किया है पोलैंड में। बाय डिफॉल्ट आप इसके लिए एलिजिबल भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी अचानक से इनकम टैक्स नोटिस आने शुरू हुए हैं, और उसको बोलते हैं, वो मांग रहे हैं, वहाँ वो दो डॉक्यूमेंट मांगते हैं। एक तो मैरिज सर्टिफिकेट जो आपका रिलेशनशिप प्रूव करता है, और दूसरा कम्युनिटी प्रॉपर्टी रिजाइन इन पोलैंड, जिसको स्प्लॉनोसको मायाकोवा बोलते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, जहाँ पर हमारे सारे दोस्त जो हैं वो अटक जाते हैं और वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज ये डॉक्यूमेंट जनरली इंडियन मैरिज एक्ट में है ही नहीं, और इसका प्रोविजन भी नहीं है। और इसी चक्कर में काफ़ी लोगों को नोटिस आ रहे हैं, और जो लोग सबमिट नहीं कर पा रहे हैं डॉक्यूमेंट, उनको रिवाइज रिटर्न फाइल करने को बोले जा रहे हैं एज अ सिंगल। और सोचो, अभी का और पिछले सारे जो नोटिस को दोबारा अगर उसे फाइल करना पड़े लास्ट 4 साल और 5 साल को भी सिंगल, तो कितना बड़ा अमाउंट टैक्स का बचेगा। इट विल बी अ बिग ब्लो फॉर द कॉमन मैन लाइक अस। I also fall in that category because I also stay with my family, and technically if you see we are eligible, but क्या कर सकते हैं इसमें। तो इसीलिए ये टॉपिक जो है वीडियो, वो इसी बारे में है, इसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। क्योंकि इंडिया में मैरिज जो है बाय डिफॉल्ट आपका ऑटोमेटिक जॉइंट प्रॉपर्टीज को ऑटो क्रिएट नहीं करता है।
और ना ही वो ऐसा इंडिकेट करता है कि आपकी बाय डिफॉल्ट जॉइंट प्रॉपर्टी है। जैसे कि आपने देखा होगा डिवोर्स केसेस फाइल होते हैं तो उसमें मेंटेनेंस एक्ट आ जाता है पिक्चर में, है ना। आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सैलरी मेंटेनेंस देना पड़ता है, इट कुड बी 20%, 30%, और डिपेंड्स कोर्ट का जजमेंट क्या है उसके ऊपर। तो इस वीडियो का पर्पस आपको सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करना है इस इश्यू के बारे में, ताकि आप में से किसी को आए तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कीजिए जिसको हम बोलते हैं टैक्स नोटिस वाला ग्रुप। और जब आप उस ग्रुप में जाएं तो इस वीडियो को देख के जाएं, ताकि आप हर चीज रिपीट ना करनी पड़े, क्योंकि हर कोई आजकल चैट जीपीटी और कोपायलट यूज कर रहा है और लंबे लंबे चैट पेस्ट कर देता है बिना कुछ। वो सब हम कर चुके हैं, सबके पास, हमारे पास चैट जीपीटी कोपायलट हम सबके पास है, ठीक है। लेकिन कुछ नया शेयर करो जो कि हम लोगों ने ट्राई ना किया हो। और इस वीडियो का मेन पर्पस ये है, बताना है आपको कि देखो जी, ये 4 महीने से हम लोग जो कर रहे हैं ना ये इसको ट्रबल शूट, तो उसमें ये चीजें हम फिक्स कर चुके हैं या हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ आपको पता है तो मोस्ट वेलकम है, बताइए। लेकिन ये लंबे लंबे रिप्लाई पेस्ट मत कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पैमिंग हो जाती है। मैं आपको हमारा ग्रुप दिखाऊंगा इसमें। ये देखो, टैक्स नोटिस वाला अपना ग्रुप है, कितने सारे हो गए हैं देखो इसमें, हजारों से भी ज्यादा मैसेजेस आप देखोगे तो ये देखो पूरा दिन चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। ये देखो कितने सारे चैट्स, ये मुश्किल से कुछ ही दिन हुए इसको बनाए हुए। तो इमेजिन करो अगर सब इतने लंबे लंबे रिप्लाई पेस्ट करेंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो इसीलिए आप जब इस ग्रुप में आए तो ये वीडियो देख के आए ताकि आपको ये पता चल जाए कि हम क्या क्या चीजें ट्राई कर सके और हम फिर आगे की बात करें, ठीक है। आपका कोई भी दोस्त टैक्स कंसल्टेंट है या कोई लॉयर है तो ये वीडियो उसे दिखाइए और बताइए कि क्या उसके पास इस समस्या का कोई भी पॉसिबल सॉल्यूशन है। ऑब्वियसली कोर्ट में जाके कंटेस्ट करके हम ऑर्डर लाके उसको रेफरेंस करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, बट दैट विल बी लॉन्ग वे टू गो। बट एटलीस्ट अभी इस टाइम पे कोई सॉल्यूशन किसी के पास है, क्योंकि हमने 30+ लोगों से बात करी है, टैक्स कंसल्टेंट लॉयर, किसी के पास कोई भी समस्या नहीं है। और जिनको नोटिस आया है वो टैक्स कंसल्टेंट वाले हैं 50%, जिन्होंने वहां से फाइल करवाया तब भी आया था, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। आप कुछ जो आप एक्सेप्ट एंड सेंड करते हो ना टैक्स, मैं टैक्स कंसल्टेंट के अगेंस्ट नहीं हूँ, ना ही मैं चैट जीपीटी कोपायलट के अगेंस्ट हूँ। मेरा जो मेन प्रॉब्लम है वो सिर्फ इतना है कि हाँ, इट शुड बी वर्थ, ठीक है ना। आप सिर्फ एक्सेप्ट एंड सेंड करने के, क्लिक करने के पैसे नहीं देंगे। ऑब्वियसली आपके पास पिट 38 या डिविडेंड वगैरह के बेनिफिट्स है तो इट मेक सेंस टू पे, बट सिंपली एक्सेप्ट एंड सेंड करके ही सबमिट करना है और उसमें भी आप सिंगल करना है, तो उसके लिए आप क्यों किसी को पे करोगे। सिंपल सा लॉजिक है मेरा। तो कोई डेफिनेटली बहुत नॉलेजियस एक्सपर्ट टैक्स कंसल्टेंट या लॉयर है आपके पास पोलैंड में जो इस समस्या का समाधान हमें बता सकता है तो बताइए। हमारी कम्युनिटी से जो अपने जिन लोगों को नोटिस आए हैं उन वॉलंटियर्स के भेजेंगे। और अभी ज़्यादा नहीं है, मेरे मेरे पास जितने पहुंचे हैं वो शायद 16-17 ही है, ज़्यादा नहीं है। तो आई थिंक वी कैन डेफिनेटली विल बी इंक्रीजिंग, एंड बिफोर दैट सिचुएशन हम कुछ ना कुछ समस्या का समाधान निकालें। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ द वीडियो। और ये मिथ में ना रहे, अज्यूम ना करें, जज ना करें लोगों को, क्योंकि ठीक है मुझे नोटिस नहीं आया लेकिन औरों को किसको आया है, और वो बहुत जेन्युइन लोग हैं, फैमिली वाले लोग हैं, 3-4 साल से रहे हैं, 2 साल से तो पोलैंड से बाहर भी नहीं गए। ऐसे लोगों को भी आया, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है तो भी आया है, हस्बैंड वाइफ में से हस्बैंड वर्किंग है और वाइफ नहीं वर्किंग है तो भी आया है। हर सिनेरियो पे आ रहा है, ऐसा कोई अछूता नहीं है कि हाँ कि नहीं उसने कुछ गलत किया होगा तभी उसके पास आ रहे हैं, नहीं, रैंडमली आ रहा है और सभी टाइप के लोगों को आ रहा है, ठीक है। और एक ने अज्यूम किया था कि भाई 6 महीने से ज्यादा हम रह रहे हैं तो इसलिए आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। जो 6 महीने से बाहर इंडिया में था उसके नहीं, जो पोलैंड में ही रहे हैं 2 साल से कहीं भी नहीं गए पोलैंड से बाहर, उनको भी आया है। ये एजम्पशन मत कीजिए प्लीज, किसी को जज मत कीजिए और रिलैक्स मत होइए सब सोच के कि भाई पैनिक नहीं करने को बोल रहा हूँ, बट ये बोल रहा हूँ अज्यूम मत कीजिए, क्योंकि हर किसी के सिनेरियो हम भी ट्रबल शूट ही कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटेंशन इज नॉट टू क्रिएट पैनिक बट find a solution as technically even after marriage certification commune property document is respected and there is no clarity। I mean rejected हो गया, not respected, rejected हो गया, sorry, pardon me for typo errors। जल्दी जल्दी में बनाए डॉक्यूमेंट तो थोड़ा इधर उधर हो गया, तो उसके लिए आई एम सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो अब आपको पता है हमारे चैनल पे हम हमेशा क्या करते हैं, सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सॉल्यूशन के साथ ही आता हूँ, लेकिन इस बार पहली बार प्रॉब्लम लेके आया हूँ क्योंकि ज़्यादातर इंडियन एनआरआई कम्युनिटीज का प्रॉब्लम है। और आज किसी का है, कभी किसी को आएगा, तो आज पहली बार मैं कोई प्रॉब्लम लेके आया हूँ, सॉल्यूशन की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। सॉल्यूशन तो हम निकालेंगे बेस्ड ऑन वट एवर यू पुट इन द कमेंट बॉक्स एंड वी विल ट्राई टू एक्सप्लोर दोज ऑप्शंस एंड विल सी, ठीक है। लेकिन मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ यहाँ जेन्युइनली लोग हैं, जो कि मैंने अभी बताया, फैमिली के साथ रहने सब कुछ है, ठीक है। ऐसा नहीं सिंगल न रहे डबल रहे, सभी को नोटिस आ रहा है। कुछ लोग ये एजम्पशन में है कि भाई हमने प्रॉपर्टी खरीद ली है पोलैंड में तो उनको नहीं आएगा, तो हमने ये भी जस्टिफिकेशन दिया है। और सेम इंडिया में कुछ लोगों के पास जॉइंट प्रॉपर्टी है तो उनको नहीं आएगा, तो जस्टिफिकेशन आते हैं वो को ओनरशिप प्रूफ करता है, कम्यून प्रॉपर्टी को प्रूफ नहीं करता है, ठीक है। पॉलिश लॉ में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट हस्बैंड वाइफ की जो प्रॉपर्टी है वो कम्यून मानी जाती है अंटल उन्होंने प्री नेप्चुरल एग्रीमेंट ना साइन किया हो, इंटर सीजर डॉक्यूमेंट साइन ना किया हो। लेकिन इंडियन लॉ में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है, ठीक है ना। और ये जो लेजिस्लेटिव डिफरेंस है
इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि आपने कुछ गलत किया है या किसी टैक्स कंसल्टेंट ने गलत किया है, नहीं, उन्होंने तो बाय डिफॉल्ट जो होता है वही किया है कि हस्बैंड वाइफ है, जॉइंट है, साथ में तो किया है, लेकिन लीगल डिफरेंसेस का किसी को भी नहीं पता था यार। तो और जैसे कि मैंने बताया, ये प्रॉब्लम अब स्टार्ट नहीं, 4 महीने पहले पहला केस आया था मेरे पास, फिर दूसरा आया, तीसरा आया, ऐसे करके फिर 4 अलग लोगों से बात कर रहा था मैं। तो मैंने चारों को एक साथ एक ग्रुप में मर्ज किया और उसके बाद मेरा जो मेगा ग्रुप है उसमें पोस्ट किया, तो पता चला और भी लोग हैं जिनको सेम नोटिस आया है। तो नाउ वी आर अवेयर कि हाँ ये प्रॉब्लम आई है और हर रोज एक नया बंदा जुड़ रहा है, तो इट मीन्स द प्रॉब्लम इज इंक्रीजिंग एवरी डे। ओके, तो चलो अब बात करते हैं फटाफट हम लीगल मैरिजेस डिफरेंसेस की। तो सबसे पहले बात करते हैं सीरियस कितना है इश्यू। तो देखिए, ऑब्वियसली बात है, अगर करंट ईयर या 1 साल की बात होती है या फ्यूचर का होता तो हम कुछ ना कुछ एग्रीमेंट जो ढूंढ रहे हैं, अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं ऑप्शन के कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं फ्यूचर में। और दूसरा प्रॉब्लम है कि पास्ट की चीज़ों को कैसे फिक्स करें। फ्यूचर के लिए हो सकता है एक एग्रीमेंट बना के फिक्स हो जाए, या फिर हम ट्राई कर रहे हैं एक ऑप्शन पे, मैरिज सर्टिफिकेट को हमने अगर पोलैंड में ट्रांसफर किया, टेक्निकली कम चांसेस है बट ट्राई कर रहे हैं कि अगर उससे कुछ सॉल्व हो जाए, और अगर वो सोल्यूशन काम करता है तो वी विल लेट यू नो, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए ये है कि अ, अगर जस्ट इमेजिन करो कि आपको अचानक से बोला जाए कि आपके पास्ट में जाके पूरे 5 साल का रिटर्न फाइल करना है दोबारा से। इमेजिन अमाउंट कितना बड़ा होगा, वो भी सिंगल में, और उसके बाद पेनल्टी भी लगेगा और साथ में इंटरेस्ट भी लगेगा, और कुछ केस में पेनल्टी भी लग रहे हैं, डिपेंड करता है आपके ऑफिसर टू ऑफिसर। तो इमेजिन कितना बड़ा अमाउंट होगा, कितना बड़ा ब्लो होगा एक आम आदमी के लिए जिनके पास इंडिया में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ पर भी रेंट पे रह रहे हैं, और अचानक से इतना बड़ा अमाउंट देना पड़ेगा। इट्स अ बिग पेन। तो और अगर आपको लगता है टैक्स कंसल्टेंट एंड लॉयर्स हेल्प कर सकते हैं इस केस में, हमने 30+ टैक्स कंसल्टेंट अभी तक ट्राई कर लिए हैं, लॉयर्स इंडिया के भी और यहाँ के भी ट्राई कर लिए हैं। बट एज इफ नाउ ना तो कोई ऐसा इंडिया में एफिडेविट या लीगल ओपिनियन के लिए कोई मिला है ऐसा हमें, ना ही पोलैंड वाले ये सब साइन करने को तैयार है। पोलैंड में कोई भी ऐसा नहीं है। अगर आपका कोई लॉयर है जो इस तरह के डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट एंड एफिडेविट कर सके, ठीक है, एज पर पॉलिश लॉ, जो हमें हेल्प करे, तो प्लीज डू शेयर। हम एक आधे वॉलंटियर्स ट्राई करेंगे, अगर उनके लिए काम किया तो फिर सबके लिए काम करेगा। तो आई होप आप समझ रहे हो मेरा इंटेंशन इस वीडियो का। जैसे कि आप में से ज़्यादातर लोग जानते हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, कि हम जो भी समस्या है उसको एज अ कम्युनिटी सॉल्व करने की प्रॉब्लम करते हैं, चाहे वो स्कूलिंग हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे कुछ भी हो, एजुकेशन हो, कुछ भी हो। तो उसी में से एज अ कम्युनिटी ये कुछ स्टेप्स हमने ट्राई किए जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो जैसे कि होता है कि हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना के इसको सॉल्व करने की कोशिश करी है, और अभी मैंने आपको दिखाया कितनी सारी कॉन्वर्सेशन 3-4 दिन में, 5 दिन में ही हो गई, इतनी ज़्यादा, 1000 से ज़्यादा मैसेजेस। तो इमेजिन करो किस लेवल पे हर इंसान ने, चाहे वो आपके एआई टूल्स हो, चाहे पर्सनल कॉन्टेक्ट हो, हर लेवल पे ट्राई किया है। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक उसमें कोई खास हमें सक्सेस नहीं मिला है। ये हमने कुछ ट्राई किए थे, जैसे रिप्लाई हमने किया मैरिज सर्टिफिकेट तो वो एक्सेप्ट हो गया, लेकिन उसके साथ कम्यून प्रॉपर्टी का एविडेंस उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया, ये बोल के कि दिस डजंट प्रूव द कम्यून प्रॉपर्टी डिजाइन। फिर हमने एड्रेस रजिस्ट्रेशन एंड रेंटल कॉन्ट्रैक्ट किया, सोच के कि भाई हम तो रेंट पे रहने वाले लोग हैं, तो हमारे लिए तो यही एक कम्यून प्रॉपर्टी है, और ऑब्वियसली उसके सारे एसेट्स वगैरह एक्सपेंसेस हम सभी लोग शेयर करते हैं, तो टेक्निकली तो हमारे पास वही प्रॉपर्टी है। बट उससे भी बोला कि नहीं, ये जॉइंट नहीं है। फिर जॉइंट प्रॉपर्टी जिन लोगों के पास इंडिया में है वाइफ के साथ, वो सबमिट करके देख लिया एक हमारे ग्रुप मेंबर ने, इट डिडंट वर्क आउट। एंड देन उसके बाद लास्ट वाज द पॉलिश कंबाइंड प्रॉपर्टी बाय बोथ स्पाउस। बाय द सेम अबव लॉजिक ये को ओनरशिप में आता है, बट इट डजंट प्रूव द कम्यून प्रॉपर्टी डिजाइन। इस तरह से नोटिस आ रहा है। इस नोटिस को आप ध्यान से देखोगे तो ये 2 पॉइंट्स है जहां पर वो बार बार, जहां पर हम बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट है मैरिज सर्टिफिकेट, जिसका कोई दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग गेट्स एक्सेप्टेड। पर दूसरा जो ये है मैरिटल प्रॉपर्टी डिजाइन, यानी ये वाला, यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, क्यों हो रहा है? क्योंकि लेजिस्लेटिव डिफरेंस है इंडिया के और पोलैंड के बीच में। ठीक है, थोड़ा सा अगर डिटेल में समझेंगे तो पोलैंड में क्या होता है, सैलरी अर्न बाय हस्बैंड आफ्टर वेडिंग। ठीक है, अगर उन्होंने सेपरेट इंटर सीजर डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया है या प्री नप्चुअल एग्रीमेंट साइन नहीं किया है, तो ऑटोमेटिकली इट बिलोंग्स टू हस्बैंड एंड वाइफ। मतलब अगर हस्बैंड की 4,000 सैलरी है, वाइफ की 10,000 सैलरी है, तो दोनों मिला के 14 होता है। इट विल बी डिवाइड बाय 7 7 तो दोनों का माना जाएगा। ठीक है, इंडिया में सैलरी अर्न बाय हस्बैंड बिलोंग्स टू हस्बैंड अनलेस ही चूजेस टू शेयर, दैट्स द डिफरेंस दे आर फोकसिंग ऑन। समझ में आया? तो मतलब ये वाला फ्लॉ है, फ्लॉ नहीं बोलेंगे, मतलब इट्स लाइक ऐसा चलता है इंडिया में। फिर से यहाँ और अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश की है कि पोलैंड में कम्युनिटी प्रॉपर्टी इज ऑटोमेटिक, बट इन इंडिया द लीगल सिस्टम इज डिफरेंट। इट डजंट हैव स्टैट्यूटरी कम्युनिटी प्रॉपर्टी एग्जाम लाइक इन पोलैंड, सो टैक्स ऑफिस मस्ट कंफर्म दैट योर मैरिज लीगली एग्जिस्ट एंड योर मैरिज नॉट गवर्न बाय सेपरेट प्रॉपर्टी डिजाइन। तो क्या प्रूव करोगे? ऑब्वियसली यही डॉक्यूमेंट, कम्युनिटी प्रॉपर्टी डिजाइन का ये वाला डॉक्यूमेंट चाहिए हमको। ये डॉक्यूमेंट क्यों नहीं दे सकते आप? बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन, since you are married in India, you cannot provide a community property certificate because India doesn't issue such document. प्रोविजन ही नहीं है सर, तो क्या करोगे आप, है ना? तो चलो फिर इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। ये सिविल लॉ की बात हो रही है,
हाँ, क्या क्या चीज़ें शादी से पहले आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो तो आपका कम्युनियन प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं होता, लेकिन शादी होने के बाद जितनी भी चीज़ें आप अक्वायर करते हो वो सारी चीज़ें कम्युनियन प्रॉपर्टी नहीं, हस्बैंड वाइफ का बराबर माना जाता है, साधारण भाषा में अगर बात करें तो। ठीक है। आप जॉइंट टैक्सेशन पोलैंड में फाइल करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है? मैरिड होना चाहिए होल टैक्स ईयर के लिए, मैरिटल प्रॉपर कम्युनिटी प्रॉपर्टी ड्यूरिंग दिस ईयर होना चाहिए पॉलिश लॉ के हिसाब से, और पॉलिश मैरिज सर्टिफिकेट से आप शादीशुदा हो तो डेफिनेटली आप जो है वो बाय डिफॉल्ट कम्युनियन प्रॉपर्टी के लिए होती है आपकी, आपको अलग से कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन इंडियन मैरिज एक्ट के हिसाब से अभी कम्युनियन प्रॉपर्टी का प्रोविजन नहीं है, इसलिए हमारे ये सारा प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी टैक्स रेजिडेंट ऑफ द पोलैंड आपको टैक्स रेजिडेंट होना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि आपका हस्बैंड काम कर रहा है वाइफ काम नहीं कर रही है, दोनों काम कर रहे हैं, दोनों ही केस में आप जॉइंट टैक्सेशन कर सकते हो। ठीक है ना? तो इट इज वेरी क्लियर। और ये पॉलिसी सिविल लॉ के हिसाब से है। तो अगर सिंपल शब्दों में आसान भाषा में समझना चाहें तो मैरिटल प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट पोलैंड में जो है कम्युनिटी प्रॉपर्टी का डिफॉल्ट, इंडिया में सेपरेट प्रॉपर्टी सिस्टम है। टैक्स फाइलिंग में पोलैंड में ऑप्शनल जॉइंट फाइलिंग है, इंडिया के केस में ओनली इंडिविजुअल फाइलिंग है, अनलेस कि आप प्रूव कर सको कम्युनिटी प्रॉपर्टी रिजाइन। कैसे करोगे वही हम लोग ढूंढने की कोशिश करें इस वीडियो के माध्यम से। और इनकम ओनरशिप ऑफ ऑफन लीगली जॉइंट एंड इंडिया में ये टैक्स्ड इन हैंड्स ऑफ द अर्नर, मतलब वो डिसाइड करता है, जो कमा रहा है वो डिसाइड करता है कि वो क्या करना चाहता है उसको और कैसे करना चाहता है। ठीक है। चलिए अब इससे ज्यादा की बात, लिंक आपको दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिए। प्लीज चैट जीपीटी वगैरह के रिप्लाई मत पेस्ट कीजिएगा। आपका कोई रियल एक्सपीरियंस हो, कोई आपका लॉयर हो, दोस्त हो, कंसल्टेंट हो, टैक्स वाला हो, आप उससे बात करके जो अगर आपको कुछ नया मिलता है इनके अलावा जो मैंने शेयर किया है तो प्लीज शेयर कीजिए, क्योंकि अभी तक सोल्यूशन मुझे इसका एक ही दिखा है। अगर आपकी पॉलिश वाइफ या फिर पॉलिश मैरिज सर्टिफिकेट है आपके पास विदाउट सेपरेट प्रिंसिपल एग्रीमेंट और इंटर, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो डेफिनेटली दिक्कत है। और बाकी कंट्रीज के साथ भी होगी ये दिक्कत फॉर श्योर, बट मैं इंडिया पे फोकस कर रहा हूँ बिकॉज यार मेरे को तो डायरेक्ट इंडिया अफेक्ट कर रहा है। तो अगर आपको में से किसी को भी पता है कि ये कैसे प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, जस्ट डू शेयर इन द कमेंट बॉक्स। और आई प्रॉमिस मेरे जो फाइनल वीडियो आएगा, चाहे सॉल्यूशन मिले ना मिले, दोनों ही बातें मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि ये हुआ कि नहीं हुआ। But for now, since you're married in India, you cannot provide a community property certificate because India doesn't issue such document. Hope latest use case and solution बिना AI के हम ढूंढ पाएंगे कुछ ना कुछ, I mean AI से copy paste के बिना भी, based on the experience of viewers. And please like, share and subscribe this video as it may help someone in need. Check the description for reference link, and if you have received such notice, comment and we will add you to the income tax notices group. So let's help and support each other, and let's as an Indian, and let's make it one India, and let's support each other to make the world more beautiful, and that's the main intention of all my videos. Thank you so much for watching. Thank you for your patience. अगर आप यहाँ तक आए हैं तो बहुत बड़ी बात है, आसान नहीं होता यार। एक लड़का जो वीडियो डाल रहा है ऑब्वियसली काम की चीज़ पे डाल रहा है, उसको देखना इतनी देर तक आसान नहीं है, बट आपने अगर देखा है तो डेफिनेटली यू रियली हैव गुड पेशेंस। सो हर वीडियो में बोलता था सॉरी फॉर बैचलर, बट इस बार वो बैचलर्स बोल रहे हैं कि सॉरी फॉर मैरिड जॉइंट प्रॉपर्टी जॉइंट टैक्सेशन और टैक्स पेयर, बिकॉज इस बार उनको लग रहा है कि शायद हम लोग इसको ढंग से बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। बट होप वी विल फाइंड सम सॉल्यूशन एंड विल कम अप विद सम सॉल्यूशन। प्लीज गाइस फोकस, एंड ग्रुप में या आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में डालिए, डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए अपडेट्स के लिए, एंड लेट्स स्टे कनेक्टेड एंड सपोर्ट ईच अदर। थैंक यू सो मच। नमस्कार, गुड नाइट एंड दोविजनिया।